हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को था। University Grants Commission has released a notification regarding national eligibility test on the official website of UGC NET. As per the official notification, institution has informed कि UGC NET December 2020 and June 2021 exams have been merged to regularize the exam cycle. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया था, अब वो कंडक्ट किया जाएगा अलोंग विद जून 2021 का एग्जाम जो डिले हो चुका था। इसके साथ ही एनटीए ने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को भी रीओपन कर दिया है, स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट 2021 टिल September 5, 11:50 PM. The last date to submit the application fee is September 6. The application process for UGC NET 2021 was started on August 10th. For more information, candidates can visit the official website of UGC NET and fill their forms as soon as possible. Also, the JRF slots of UGC NET for December 2020 and June 2021 exams will also be merged. Candidates must rest assured that the methodology for subject-wise cum category-wise allotment of JRF will remain the same. Specifically for UGC NET or JRF, we have come up with 3 different kind of courses. The first course is known as video course. In this course, you will get complete quality video lectures all associated with paper 1. So if you're specifically targeting paper 1, then you need in-depth knowledge of all the 10 sections which are included in paper 1 of UGC NET exam. Paper 1 is a very important exam, especially for those candidates who want to clear JRF as well. If you score 70 plus marks in paper 1, then definitely there'll be a high chance that you can also clear the JRF cutoff. Here at Panisha Bharati Institute, we offer video course, which is specifically designed for those students who want to study for UGC NET through distance learning program. In this video course, we provide more than 116 videos which will have complete knowledge and complete concept explanation of all the topics associated with paper 1. After joining this course, you will get complete access to all these video lectures. We also provide complete PDF notes for each and every section of paper 1. These PDF notes will also be in simple and concise manner, and also they are constantly updated so that all the relevant information is included in these notes from time to time. The video course also includes online mock test series and MCQs which will help you to practice the past year questions and various sample papers so that you are ready for the paper 1 along with enough practice of the questions. Apart from video course, we have another kind of course which is known as live interactive course. Yes, अगर आपको लगता है कि आपको हर एक टॉपिक की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि एक टीचर आपके साथ इंटरैक्टिव वे में आपके डाउट्स क्लियर करे और आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर करे, then this is the right course for you. In live interactive course, basically you will get the chance to interact with the teacher through live Zoom classes. In these live classes, you can ask your doubts, teacher will explain each and every topic associated with paper 1 and will also take up your questions. So if you're looking for a live course specifically for preparing paper 1, then this is the right choice for you. Our third course is classroom offline course. If you're looking for offline coaching, then Panisha Bharati Institute also offers offline coaching for UGC NET or JRF here at Ludhiana Center. Also, we have come up with a unique crash course program specifically for paper 1 for those students who are attempting UGC NET and JRF this year. This crash course will complete the entire syllabus of paper 1 and will also help you to score good marks in this paper. For more information regarding the crash course and other 3 courses, you can visit our website panishiatutor.com. Also, you can avail special discount by availing the promo code mentioned on the website. Apart from paper 1, we also provide coaching for the subjects associated with paper 2, such as management and commerce. Now we will discuss about the success strategy, eligibility criteria and exam pattern of UGC NET JRF exam. UGC NET is one of the most prestigious and important national exams of our country. Every year lakhs of students appear for this exam in order to become assistant professor or for JRF. UGC NET is basically conducted as a national level test for students who are aspiring to become assistant professors or who want to go for junior research fellowship in different Indian colleges and universities. This exam is conducted twice a year.
Basically, this exam is conducted in computer-based mode, and this exam consists of 2 papers. Paper 1 consists of 50 questions of 100 marks. Apart from that, the paper 2 consists of 100 questions of 200 marks, and this is a subject-specific exam which depends on the subject of your master's degree. There is no negative marking for incorrect responses in the UGC NET exam, so you can use it to your advantage and mark as many questions as possible. Now let us discuss the eligibility criteria for UGC NET or JRF exam. Candidates need to secure at least minimum 55% marks in their master's degree or equivalent degree from a recognized institute in order to be eligible for this test. Apart from that, there is no age limit if one needs to apply for the assistant professor exam. But if one wants to go for JRF, then the age limit is 30 years apart from relaxation for certain categories. Now, it is very important to understand the exam pattern and to understand the need of this exam in order to achieve the success in the very first attempt. UGC NET JRF एग्जाम की जो वैल्यू है वो समय के साथ काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी करेक्ट सोर्सेज क्या है। हर एक टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टेंटली सैम्पल पेपर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस और उनको सॉल्व करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको हार्ड वर्क की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपको चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सके कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की जानी चाहिए। पनेशा भारती इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर ना केवल हम आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करेंगे बल्कि आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे कि बेसिकली इस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। यहाँ पर आपको ना सिर्फ अपडेटेड नोट्स, प्रॉपर MCQs, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट वीडियो लेक्चर्स, लाइव इंटरैक्टिव एंड क्लासरूम प्रोग्राम, इतनी सारी ऑप्शंस मिलेंगी, बल्कि इसके अलावा एक्सपर्ट्स के साथ कांस्टेंट इंटरैक्शन करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर आप भी UGC NET और JRF का एग्जाम देना चाहते हैं और उसे अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए पनेशा भारती इंस्टीट्यूट एट इट्स लुधियाना ब्रांच। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके घर बैठकर मिल जाए देन प्लीज लॉग इन टू www.panesiatutor.com। इस वेबसाइट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे वीडियो, लाइव इंटरैक्टिव और क्लासरूम कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा अगर आप हमारी पेपर 1 का डेमो लेक्चर या एक डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर भी पनेशा ट्यूटर की वीडियोस देख सकते हैं। सो हरी अप, विजिट पनेशा भारती इंस्टीट्यूट टुडे और विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। You can also call on the number given below for getting more guidance and expert advice for various government jobs and exams and also advice related to UGC NET or JRF.